Assalamualaikum dear students and welcome to online lecture of English at Imperial Science College Chishtian. Dear students, this is our sixth lecture and इस लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमारी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है बटन, इसको हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह. इसका आज हम टुडे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट्स एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव, चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्प चॉप्स. के हमारा जो क्वेश्चन है कि नॉर्मा ने जो लैम्प चॉप्स थी यानी कि वो कहाँ रखे. A option in the oven, B in the broiler, in the freezer, in the basket. B option जो है in the broiler. Broiler में उसमें उनको रखा था. This is correct one. Question number second. There was a small man. एक छोटे कद का आदमी जो था कहाँ पर था? In the porch, in the room, at the door, in the hallway. हमें पता है कि D option जो है is correct one in the hallway. Hallway में वो था. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर वाज द की टू द बेल यूनिट डोम. बेल यूनिट डोम जो है उसकी की कहाँ पर थी? इन द बॉक्स, इन द ड्रायर, इन द सील्ड इनवेलॉप, इन द पॉकेट. इसका जो ऑप्शन सी है इन द सील्ड एनवेलॉप, दिस इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर पुशिंग द बटन. उस बटन को दबाने के लिए क्या रिवॉर्ड मिलना था? $25,000, $50,000 and $5,000 and $2,500. B option is the correct one, $50,000. Question number 5, what was the question of Norma that made Mr. Stewart impressed. मिस्टर स्टीवर्ट का कौन सा मिस नॉर्मा का कौन सा क्वेश्चन था जिसने मिस्टर स्टीवर्ट को शर्मिंदा कर दिया? ठीक है. Where do you live? How do you do? What do you sell? And who do you represent? This is the correct one. D. Okay, who do you represent? What could have happened by pushing the button? कि उस बटन को दबाने के नतीजे में क्या होना था? Somewhere in the world, a bird would die. Someone would die in the neighborhood. Some songs would be heard. Somewhere in the world, some unknown person would die. D वाला जो ऑप्शन है, D option, this is correct one. Question number 7. Why didn't author agree to the offer of Mrs. Stewart for pushing the button? Author क्यों यानी कि agree नहीं हुआ उसके ऑफर से? ऑप्शन ए जो है, he considered it a practical joke. He didn't rely on him. He considered death of some unknown person a murder. He didn't believe him. Option number C जो है, he considered death of some unknown person. This is correct one. And question number 8. Why was the offer of $50,000 attractive for Norma? ये ऑफर उसके लिए क्यों दिलकश थी, पुरकशिश थी? She had a plan to improve her life. She felt no harm in helping someone to conduct a psychological research. She wanted to purchase a set of jewelry. She wanted to buy a new house. Option A is correct one. She had a plan to improve her life. Question number 9. Who, in Norma's opinion, was the researcher? A psychiatrist, a doctor, an eccentric millionaire, a murderer. B option is the correct one, an eccentric millionaire. Question number 10. Why did Norma take the consent of her husband to comply with the instructions of Mrs. Stewart? G. इसका ये options हैं, because he couldn't understand the idea, because he would share the offer, he considered it a murder, and D option, he considered it immoral to kill some unknown person for the sake of money. Yes, D option is the correct one. Now dear students, we move towards the answer questions. Question number 3. First question, why did Norma consider the tone and attitude of Mrs. Stewart offensive? Miss Norma जो है क्यों वो उसका जो रवैया है मिस्टर स्टीवर्ट का उसको यानी कि वो जरहाना या ऑफेंसिव उसको क्यों लगा?
Miss Norma considered the tone of Mrs. Stewart offensive because firstly she considered him a salesman and she thought that this is a sales pitch. So she excused him by saying that she was rather busy, and when Mrs. Stewart understood that she is not attending him, so he told her that it could be proved valuable monetarily, and that's why Miss Norma considered the tone of Mr. Stewart offensive. Now we discuss the second question. Why did author disagree with his wife? मिस्टर ऑर्थर जो है वो अपनी वाइफ से डिसएग्री क्यों करता है, वो क्यों उससे यानी कि इत्तेफाक नहीं करता? Because you know Mr. Arthur is a thorough gentleman and he considered it a murder and an immoral act to kill someone for the sake of money, क्योंकि वो समझता है कि किसी इंसान को यानी कि पैसों के लालच में आकर किसी को कत्ल करना ये गैर अखलाकी बात है और ये एक मर्डर है, ये एक कत्ल है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. Why did Norma try to persuade her husband to agree with her? नॉर्मा ने क्यों कोशिश की अपने हस्बैंड को अपने साथ एग्री करने के लिए? Norma tried to persuade her husband to agree with her because she wanted to get $50,000 by pushing the button, definitely, because she wanted to improve her lifestyle and she wanted to fulfill her desires, to materialize her desires. That's why she tried to persuade her husband. Question number 4. What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? नॉर्मा ने क्या क्या वजूहात बयान की अपने हस्बैंड को कि वो ये जो ऑफ़र है इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल Norma said that it could be a psychological research. She said that it could be a practical job, and then she said that perhaps some eccentric millionaire is playing game with the people, and he wanted to know, and they wanted to know the reaction of the people, and they wanted to know what common people would do if they are offered money. And then she tried to persuade her by saying that they can have a chance of a trip to Europe, and they can buy new furniture, new house, new clothes and a car. These were the reasons. Question number 5. Why did Mr. Stewart continue persuading Norma? Mr. Stewart ने मिस नॉर्मा को यानी कि उसको परसुएड करना क्यों जारी रखा, क्यों उसको कायल करना उसने जारी रखा? Because Mr. Stewart continued to persuade Norma because he knew her greedy nature, because he felt that she would push the button, because she is a greedy woman and she can do everything for money. That's why he tried to persuade Norma. Now, question number 6. What was the message Norma received on pushing the button? उस बटन को दबाने पर नॉर्मा ने क्या मैसेज रिसीव किया? After receiving the button, Norma was informed about the death of her husband. उसे बताया गया था. She was informed that Mr. Arthur was died in a subway accident. उसे ये बताया गया था कि मिस्टर ऑर्थर जो है वो एक सबवे एक्सीडेंट में मर गया और वो and the showing crowd pushed Mr. Arthur in front of the train. कि वहाँ पर जो मॉब था, वहाँ पर जो हजूम था, उससे मिस्टर ऑर्थर को धक्का लगा और वो ट्रेन के सामने गिर गया और वो मर गया. ये न्यूज़ मिस नॉर्मा ने रिसीव की. एंड क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? मिस्टर ऑर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसकी क्या अहमियत थी? एक्चुअली मिस्टर ऑर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज ऑफ $25,000 and according to its terms and conditions
इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस इसके मुताबिक हिज फैमिली वुड रिसीव इट विद डबल इंडेमिनिटी इन केस ऑफ मिस्टर ऑर्थर्स एक्सीडेंटल डेथ, कि अगर मिस्टर ऑर्थर की मौत एक हादसे में हो जाती है तो उसकी फैमिली को इसकी दुगना अमाउंट यानी कि मिलेगी मिस्टर ऑर्थर की। लेकिन शर्त क्या है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि उसकी डेथ जो है वो एक्सीडेंटल हो, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 8, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, कि क्या नॉर्मा जो है अपने हस्बैंड की मौत की खबर सुनने के बाद वो नॉर्मल रही, उसने ऐसे कि कैसे उसने बिहेव किया? नो, नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ बिकॉज नाउ शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हर ओनली बेनिफैक्टर and we have studied that she couldn't breathe even, उसे ऐसे महसूस हुआ कि ऐसे वो उसको सांस नहीं आ रही हो और किस तरह से यानी कि वो रिएक्ट कर रही थी। बट अब ये स्टूडेंट्स, हमने ये स्टोरी जो है शॉर्ट स्टोरी हमने पढ़ी है, अब इस सारी स्टोरी को अगर हम इसको देखें क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ये पता चलता है। देखिए, इन लिटरेचर देयर इज़ पर्पस ऑफ एवरी राइटिंग, हर जो चीज़ है, जो भी कोई चीज़ लिखी गई है उसका एक मकसद होता है। सम राइटर्स वांट टू रिफॉर्म द सोसाइटी, कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो अपनी माशरे की इस्लाह के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं और वो किसी ना किसी सोशल इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इस तरह से ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से जो ग्रीड है वो किस तरह से नॉर्मा को उसके हस्बैंड की डेथ तक लेके जाता है, कि उसके वो यानी कि उसका हस्बैंड जो है वो मर जाता है। मे बी इट वॉज अ कोइंसिडेंट, लेकिन वो जो उसका ग्रीड है कि उसने पैसों के लालच में बटन दबा दिया, कि हो सकता है कि जैसे हमें इसमें चैप्टर में बताया भी गया है कि इट कुड बी साइकोलॉजिकल रिसर्च, कि शायद वो लोगों का रिएक्शन जानना चाहते हों, अगर लोगों को ऑफ़र की जाए पैसों के लिए तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए कि जो स्टोरी है ये हमें ये बताती है कि हमें किसी भी सूरत में चाहे जैसे भी हालात हों वो हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा कंटेंटेड रहना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि नॉर्मा वाज नॉट कंटेंटेड, नॉर्मा जो है नॉर्मा के पास जो कुछ भी था वो उससे खुश नहीं थी, एंड एज अ रिजल्ट शी हैड टू फेस द कैलेमिटी। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से ये सबक मिलता है कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसके साथ खुश रहना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लीनिंग इन द स्काई। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।